Hence, it was not possible to ascertain the views of the state legislature. It follows that Section 3 of the Reorganization Act is valid. I have penned down an epilogue at the end of the judgment, uh, maybe some sentiments involved. The Valley of Kashmir carries a historical burden. It has a social context. Thus, in involving constitutional status of the region, it is difficult to segregate the aforesaid. We, the people of Jammu and Kashmir, are at the heart of the debate. They have carried the burden of victims of conflict for several decades, originating from 1947 with the invasion of the valley. Intervening political circumstances did not permit a redressal to the fullest extent of the invasion. The consequences remain in terms of parts of Kashmir being occupied by other countries. The second round of insurgency holds its origin to the latter part of 1980s. There was a troubled situation at the ground level, which was apparently not redressed. It culminated in the migration of one part of the population of the state in 1989-90. It is something that our country has had to live with, and without any redressal for the people who had to leave their homes and hearth. It was not a voluntary migration. The situation became so aggravated that the very integrity and sovereignty of our country was endangered, and the army had to be called in. Armies are meant to fight battles with enemies of the state and not really to control the law and order situation within the state. But then these were peculiar times. The entry of the army created its own ground realities in their endeavor to preserve the integrity of the state and the nation against foreign incursions. The men, women, and children of the state have paid a heavy price. During my travels home over the years, I have absorbed that the social fabric waning and the consequences of intergenerational trauma on the already fractured society. I cannot help but feel anguished of what the people of the region have experienced, and I am constrained to write this epilogue. In order to move forward, the wounds need healing. What is at stake is not simply preventing the recurrence of injustice, but the burden of restoring the region's social fabric to what it historically has been based: coexistence, tolerance, and mutual respect. It is worth noting that even the partition of India in 1947 did not impair Jammu and Kashmir communal and social harmony. In this context, Mahatma Gandhi is famously quoted to have said that Kashmir was a ray of hope for humanity. The first step towards this is to achieve a collective understanding of the human rights violations perpetuated both by state and non-state actors against the people of this region. There have been numerous reports documenting these incidents over the years. Yet, what is lacking is a commonly accepted narrative of what has happened, or in other words, a collective telling of the truth. Internationally, the right of victims of human rights violation and the truth is an end itself. It encompasses a structural investigation of the events and social political structures that led to the atrocity, the particular circumstances of individual suffering, and an authoritative reporting of the results of the investigation. Additionally, truth-telling provides an opportunity for victims to narrate their stories, which facilitates an acknowledgement from those responsible for perpetuating the wrongs and from the society as a whole. This paves the way for reconciliation. While there are different ways of achieving these objectives, Truth and Reconciliation Commissions have been particularly effective globally. South Africa Truth and Reconciliation Commission was set up to investigate human rights violations perpetuated during the period of apartheid regime. It served as a means of reckoning or a catharsis for victims and fostered peace building. Reflecting on its success, Albie Sachs J. noticed, as a result of the TRC, the private sorrow and grief of tens of thousands was publicly acknowledged to an embracing and personalized way. Another form of acknowledgement emerged from perpetrators themselves. They had to come forward openly in front of the television cameras, owning up their crimes. Finally, there was acknowledgement by the whole country that these things have happened and can happen again, that we needed to fit all these facts together in some kind of significant pattern, which would enable us to understand their genesis and do what we could do to minimize any possibility of their reoccurrence. In the past, calls for setting up of Truth and Reconciliation Commissions have also been echoed by different sections of the Valley. In view of the inroads made globally and indigenous requests for truth and reconciliation, I recommend the setting up of an impartial Truth and Reconciliation Commission. The Commission will investigate and report on the violation of human rights both by the state and non-state actors perpetrated in the Jammu and Kashmir at least since 1980s and recommend measures for reconciliation. The Commission should be set up expeditiously before memory escapes. The exercise should be time-bound. There is already an entire generation of youth that has grown up with a feeling of distrust
and it is to them that we owe the greatest day of reparation. At the same time, considering the significance of the matter and under sensitivities involved, it is my view that it is for the government to devise the manner in which it should be set up and to determine the best way forward for the Commission. I am alive to the challenges of recommending of the setting up of the Truth and Reconciliation is beyond the realm of the court. However, I am of the view that transitional justice and its constituents are facets of transformative constitutionalism. Globally, constitutionalism has evolved to encompass responsibility of both state and non-state actors with respect to human rights violations. This includes the duty to take reasonable steps to carry out investigation of violations. It is this context that the proposed Truth and Reconciliation Commission accords with constitutionalism. Our constitution is no different and is designed to ensure that courts offer justice in situations where fundamental rights have been violated. In doing justice historically, our courts have been sensitive to the social demands of our polity and have offered flexible remedies. In Vishaka and others versus the state of Rajasthan, this court issued guidelines to address the workplace sexual harassment in the absence of an enacted law, which operated until the Parliament enacted the Sexual Harassment of Women Act. As a word of caution, the Commission, once constituted, should not turn into a criminal court and must instead follow a humanized and a personalized process, enabling people to share what they have been through uninhibitedly. It should be based on a dialogue, allowing for different viewpoints and inputs from all sides. In this context of South Africa's Truth and Reconciliation Commission, Elbe Sachs observed, "Judges do not cry. Archbishop Tutu cried. It was not a court of law in the sense of an austere institution making a highly formalized finding. It was an intensely human and personalized body there to hear in an appropriately dignified setting up what people had been through. There were comforters sitting next to the witnesses. In a court of law, no one is there to help the witness, to pat the shoulder or provide water or tissues when the person weeps. Frequently, the sessions would start with a song in a beautiful African harmony, intended to give a sense of encouragement and support to everybody present. Or it could begin with prayers, and therefore, people spoke and spoke in all regions and in all languages of the country. The testimony was televised, and thus the nation became witness to what has happened and heard the stories directly from the mouths of persons concerned. Those who spoke were not complainants in court, denouncing accused persons in the dock, nor were the litigants demanding damages for themselves, so that the greater the loss, the greater the sum would be received. Taking a leaf out of the South African book, The Principle of Ubuntu, or The Art of Humanity and Inclusiveness should be central to the process. This will facilitate a reparative approach that enables forgiveness for the wounds of the past and forms the basis of achieving a shared national identity. Needless to say, the Commission is only one of the many avenues towards the goal of systematic reforms. It is my sincere hope that much will be achieved when Kashmir opens their hearts to embracing the past and facilitating the people who were compelled to migrate to come back with dignity. Whatever has been, but the future is ours to see. A judgment is a decision which gives reasons to arrive at and reach a conclusion. By that stretch, my order is not a judgment. We have only two judgments. Both judgments are in seritum and uniformly agree that Article 370 of the Constitution of India was a feature of asymmetric federalism and not sovereignty. Article 370 was enacted as a temporary provision and did not have a permanent character. The abrogation of Article 370 does not negate the federal structure, as citizens living in Jammu and Kashmir do and will enjoy the same status and rights as given to citizens residing in other parts of the country. Paragraph 2 of CO 272, by which Article 370 was amended by taking recourse to Article 367, is ultra-virus and bad in law, albeit it can be sustained in view of corresponding power
under Article 371D. More importantly, Article 370 has been made inoperative in terms of Clause 3 to Article 370. Lastly, CO 373 is valid. I have agreed with what Justice Chandrachud has said, Chief Justice has said with regard to Article 356 of the Constitution of India. I have also made reference to Rameshwar Prasad and others versus Union of India and others, with which I respectfully agree. I also agree with the conclusions recorded by Dr. आर्टिकल 370 रिवोक के बाद यहाँ पे जो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई। तो आपको तो पता ही है कि आर्टिकल 370 से पहले तो यहाँ पे तो टूरिज्म का उतना फ्लो था नहीं। तो आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो टूरिज्म में भी बहुत बूस्ट हुआ। तो बहुत से टूरिस्ट भी यहाँ पे आए, डेवलपमेंट भी बहुत हुई और जो बेरोजगारी है वो भी ख़त्म हुई। आप खुश हैं इससे जो आज हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया हम बहुत खुश हैं उससे, क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद यहाँ पे तो है बहुत सी डेवलपमेंट हुई, स्टोन पेल्टिंग बंद हुई। यहाँ पे जो आज आम इंसान भी है वो भी आराम से बैठकर अपना वो जो है कारोबार करता है। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ। हम बहुत खुश हैं कि इससे जो है यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। 370 के बाद मार्केट भी बंद नहीं रहा, बाजार भी खुले रहे, तो क्या कहेंगे आप? 370 आर्टिकल 370 रिवोक के बाद आपने तो खुद भी देखा यहाँ पे तो कभी जो ना हड़ताल्स रही, ना कर्फ्यूज रहे, ना बाजार बंद रहे। तो ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, आपको तो खुद भी पता है कि कितना जो है यहाँ पे जो है बूस्ट हुआ टूरिज्म में। टूरिज्म में बहुत बूस्ट हुआ। टूरिस्ट बाहर के ऑल ओवर इंडिया नहीं, फॉरेन से भी जो है आउटसाइड कंट्री से जो है टूरिस्ट आए। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। यहाँ पे जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है जिनने लगातार यहाँ पे टूरिज्म के रिलेटेड प्रोग्राम्स किए, तो उससे भी यहाँ पे टूरिज्म भी बूस्ट हुआ और जो बेरोजगार थे उनको भी रोजगार मिला। तो इसलिए हम खुश हैं कि आर्टिकल 370 रिवोक के बाद यहाँ पे जो है कश्मीर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। देखिए, आज 11 दिसंबर की तारीख है 2023। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना है। जो पेटिशंस दाखिल की गई थी धारा 370 के रिलेटेड, और जो बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि कश्मीर में आज के दिन हालात खराब हैं, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं, ट्रैफिक बंद है, मोबाइल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, ये सब ढकोसले हैं और एक गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आ रहा हूँ। मैं तकरीबन 25-30 मिनट जैम में फंसा था बारामूला में, और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस कहीं पे नहीं है, कहीं पे भी मतलब सख्ती नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, या हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें उनकी तरफ से। हालात सामान्य है, नॉर्मल है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आना होगा वी वेलकम एंड वी बिलीव कि ऐसा वर्डिक्ट होगा जो जम्मू कश्मीर के हित में होगा। रिजल्ट में अभी लाइव सुन रहा था और जो यूनानिमस जजमेंट थी ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि 2 अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकजी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया।
कानून बनाकर नया, अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं है। मैं आज भी समझता हूँ कि ये हमारे रीजन के लिए एक हिस्टोरिकल चीज़ थी। हमारे जज्बात जम्मू कश्मीर के लोगों से इससे जुड़े थे, चाहे वो 370 हो या 35A हो, जिस 35A को महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1928 में बनाया था कि बाहर वाला न नौकरी कर सकता, न बाहर वाला ज़मीन खरीद सकता। और जब हमारा आईन बना तो 35A की शक्ल में उस महाराजे को फैसले को आगे बढ़ाया था। तो आज वो भी ख़त्म हो गया, दोनों चीज़ें ख़त्म। इससे हमारी स्टेट की इकानमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी महदूद, हमारी यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म, और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती, ज़ाहिर स्टेट बहुत छोटी है, अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। तो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं या बच्चियां हैं पढ़ी लिखी, वो और बेकारी हमारी बढ़ेगी, कई गुना और ज़्यादा बढ़े। तो ये तमाम चीज़ें जब रखी गई थी आर्टिकल 370 में, 35A में, 35A में, इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखा गया था कि एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ से चाइना है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है, और कोई यहाँ ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई खदानें नहीं है, बड़े कोयले की खदानें या दूसरी खदानें। तो ये चीज़ें आर्टिकल 370, 35A रखना चाहिए ताकि इनको तमाम लाज़मात मिले। आज उन लाज़मात, अब उन लाज़मात से हम कोर्ट जाएंगे, हम कह सकते हैं आज के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों का कोर्ट से भी अब भरोसा हट गया है। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। पूछा तो नहीं गया। व्हाट नेक्स्ट पॉलिटिकली, कोई और फंडा है या नाउ प्रिपरेशंस फॉर इलेक्शंस? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए। तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है।
स्टेटहुड तो उन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में कहा है, अब उसमें इलेक्शन का भी पहले ही कहा है, लेकिन इस सिलसिले में कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट तय कर दी कि भाई 30 सितंबर से पहले होना चाहिए और उसके फौरन बाद स्टेटहुड होना चाहिए, वो चीज़ तो हमारे हक में है। लेकिन जो दूसरी चीज़ थी जिससे हमारे जज्बात जुड़े थे या हमारी तरक्की के लिए, हमारी मैशत के लिए, हमारी रोज़गार के लिए, बच्चों के रोज़गार के लिए, या ज़मीन महंगी ना हो, उसके लिए जो चीज़ें थी वो हमें नहीं मिल पाएंगी। एक बात माननी पड़ेगी, बीजेपी जो कह रहा है डंके की चोट पे कह रहा है, दरपर्दा कुछ नहीं हो रहा। जो पहले दिन कहा था आज भी उसे पछता है। हाँ, ये उनका 70 साल से उनके एजेंडे में था आर्टिकल 370, लेकिन वो 370 के बाहर भी गए। स्टेटहुड ख़त्म करने का नहीं था, यूनिटी बनाने का नहीं था, ये चीज़ें वो जो उनके एजेंडा में 70 साल से नहीं था उसके बाहर भी वो चले गए। आज़ाद साहब, ये जानना चाहूँगा कि अब इस फैसले के बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ासकर डीपीएपी की जो सियासत है वो किधर जाती हुई दिख रही है? अब वो हम अपने साथियों से बात करें, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि तो दो ही बड़े इदारे हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट, उससे तो ऊपर वाला खुदा है, उसके साथ तो हमारी अप्रोच नहीं है। तो यहाँ जो जमहूरियत में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स है हमारी जमहूरियत के, वो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। बदकिस्मती से हम दोनों में हार गए। English में एक बाइट because for our kind of DPAP on the Supreme Court verdict. But it's unfortunate, but we have to, everybody has to accept the decision of the Supreme Court with a heavy heart, and unfortunately we didn't expect this decision. We were thinking that the Supreme Court will consider the sentiments of the people of Jammu and Kashmir, and also the historical background under which Article 370 was incorporated in the Constitution of the state and in the Constitution of India. That will be taken into consideration. That was our hope, but unfortunately that has not happened. But at the outset I would like to say that unfortunately when the abrogation of the Article 370 took place on 15th August 2019, it was done hurriedly, it was done without any consultation. Had that time the political parties of Jammu and Kashmir and some other political parties also been consulted, maybe we would have been able to bargain something, we would have got something, but that was not happened. It was done hurriedly and without the knowledge of the people of Jammu and Kashmir and without the leaders of the Jammu and Kashmir and without consulting the political parties of the Kashmir. So it is a sad day in the history of Jammu and Kashmir, which the people of Jammu and Kashmir have to accept. Thank you. Because there is no other course. There are only three pillars of the democracy, and these are the two strongest pillars of the democracy. That is law-making body, that is Parliament. So that has taken decision against Article 370 already in August 2019, and then as Supreme Court, which interprets the decision of the Government of India or the Parliament, that has also gone against us. So these were the two strong pillars of the democracy where one could approach. So we can only say that it is a nobody will be happy with this judgment in the state of Jammu and Kashmir. दादा जी, ये जो फैसला आया है, इससे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सियासत किस तरीके से बदल सकती है या किधर जा सकती है? अब देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी एक हकीकत है और एक है एक्सप्लॉइटेशन। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की अपने तरीके से करेंगे, लेकिन हकीकत को हकीकत समझना चाहिए। मैं डे फर्स्ट से कह रहा था, जब से मैंने नई पार्टी, बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत भी करते थे। कई सियासी पार्टियां कहते थे हमको वोट दे दो, हम तो आर्टिकल 370। मैंने तभी कहा था कोई स्टेट की पार्टी आर्टिकल 370 को नहीं कर सकती है। अगर कोई कर सकती है तो वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्योंकि स्टेट पार्टी के अगर उसको 2/3 अक्सरियत भी मिलेगी
तो उससे कुछ नहीं होगा। थैंक यू। शुक्रिया। पहले से जानते थे कि वर्डिक्ट जो आने वाला था आज, इसके बारे में हमें कुछ अंदेशे पहले से ही थे और हमने पहले से ही कहा था कि ज्यादा उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से न लगाई जाए। हम यही मानते हैं कि 2024 में एक दफा सरकार बदलती है तो उस समय हम लोग जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको एक स्टेटहुड, या हम लोग 371, हम 370 की उम्मीद दे रखते, लेकिन 371 की मीन्स आपका प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड प्रोटेक्शन ऑफ आपकी एम्प्लॉयमेंट, ये दो डिमांडें हमारी है और स्टेटहुड वापस मिलना, और वो उम्मीद हमारी पार्लियामेंट से लगी है। हमारी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हमारी कोई उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, न हमारी पार्टी ने कोई याचिका लगाई, और जिन्होंने लगाई उनका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। हमने पहले से ही कहा है कि सभी संस्थाएं देश की अंडर प्रेशर है, और ये तभी पॉसिबल है जब सरकार एक दफा 2024 में बदलेगी, तभी हम लोग जो है कि पार्लियामेंट से ही स्टेटहुड को भी ला सकते हैं वापस और इलेक्शन भी करवा सकते हैं। और आपका 371 आर्टिकल, हमने 370 कभी नहीं कहा, आर्टिकल 371 को वापस लाया जाए, और वो पार्लियामेंट से ही हमें उम्मीद है। हमने कोई याचिका जो है, हमारी पार्टी ने कभी इस बात का समर्थन नहीं दिया। हमने पहले ही मना किया था कि सभी संस्थाएं अंडर प्रेशर है, कोई एक्सरसाइज करना वेस्ट हो जाएगा। मतलब साहब बताइए, जो वर्डिक्ट आया है तो क्या कहना है आम आदमी पार्टी का? देखिए, हमने इससे पहले भी कल मीडिया में बात की, हमारा यही था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा कश्मीर में, क्योंकि इनको वोटिंग राइट जम्मू कश्मीर में नहीं थे, इनको इस चीज का नहीं था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो अगर हम ये जानना चाहूंगा होता क्या था जब आपके पास सिटीजनशिप नहीं थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता
भारत माता की जय। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गांधी साहब जिंदाबाद, गांधी साहब जिंदाबाद, गांधी साहब जिंदाबाद, गांधी साहब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गांधी साहब जिंदाबाद, गांधी साहब जिंदाबाद, गांधी साहब जिंदाबाद, गांधी साहब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। गांधी साहब जिंदाबाद, गांधी साहब जिंदाबाद, गांधी साहब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। It's celebrations, it's celebrations. भारत माता की, भारत माता की Article 370 there on the celebrating the judgment that has been given by the Supreme Court. They are saying यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर खुशियाँ मनाने के लिए आ रहे हैं और हर घर में यही तस्वीर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्री लबराम गांधी जिंदाबाद, श्री लबराम गांधी जिंदाबाद, श्री लबराम गांधी जिंदाबाद। किस तरीके से जो वेस्ट भारत माता की जय, भारत माता की जय को लेकर यहाँ पर वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। जिस फैसले का इंतजार था, भारत माता की जय, हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। 20-22 रिट्स हुई थी इस फैसले के खिलाफ कि यहाँ से 370 क्यों हटाया, लेकिन कैंसिल कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? देखिए, हमारे लिए ये बहुत ही एक खुशी का मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया लोगों के कई लोगों ने शक पैदा कर दिया था कि 370 गलत तरीके से इन्होंने हटाया है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया कि ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट का बरकरार रहेगा और 370 का इस यूपी में कोई जगह नहीं है। जो आपके समाज का था, किस तरह से देखते हैं आज का फैसला? पहले संविधान में पास हुआ, उसके बाद आज फैसला हुआ, तो आपको लगता है कि किस तरह का फैसला देखते हैं? सर, मैं बताया कि ये हमारे लिए एक नई रोशनी की किरण है, नई रोशनी की किरण है। इससे हम अपना का फ्यूचर है वो हमारा बिल्कुल सिक्योर हो गया है। अब हमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, ना ही हमें कोई बता सकता है कि ये फैसला टेम्पररी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि ये जो प्रोविजन था टेम्पररी था, अस्थायी था, ये हटना ही था और उन्होंने हटा दिया है इसको। लो एक दो ना
खबरों जी आप थोड़ा पीछे पीछे ही हो बस पीछे करो पीछे करो भैया पीछे आज सबसे बहुत ज्यादा खुशी है जो 370 हमारे वाल हो गए हमारे कश्मीर वालों ने बहुत केस किए आज सबसे ज्यादा बैठ पाते खुशी है। एक वक्त आपको आपके नहीं कर पाते थे, आप सरकारी नौकरी नहीं कर पाते, लेकिन जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को हुआ उसके बाद आज जिस तरीके से आखिरी मोहर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये नहीं होता था, ये खत्म कर दिया था इन सरकारों ने। आज ये मोदी सरकार ने ये सबसे बड़ा ऐलान कर दिया कि इन सबसे पहले जो भी हकों को इनको मिलने चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंजाबी का नाम की जय, भारत माता की जय, पंजाबी चल नहीं आता है। गांधी साहब जिंदाबाद, गांधी साहब जिंदाबाद, गांधी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की दंडनाजन चल रहा है। तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमें कि आज 370 जो हमारे कब्जे में आ गई है। पहले तो कश्मीर के कब्जे में थी, आज जो हिंदुस्तान भारत जम्मू के कब्जे में आ गई है। क्योंकि पहले तो ना कोई नौकरी मिल रही, ना पढ़ाई होती थी,